All right, welcome back to feedback and valediction session. And we are very fortunate to have two very important dignitaries coming from Jeevan Bharati Educational Trust. बहुत बढ़िया और बहुत प्राचीन स्कूल है और स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ पर हमारे वसंत भाई पटेल साहब विद्यार्थी के रूप में जाते रहे। इतनी पुरानी स्कूल है और उस स्कूल के ट्रस्ट मेंबर श्री सेक्रेटरी साहब आदरणीय श्री अजीत भाई शाह साहब पधारे हैं। तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। और डॉक्टर प्रज्ञेश जोशी साहब वाइस चेयरमैन। अभी हमारा वैल्यूज़ का सेशन हुआ तो हमने देखा कमिटमेंट। पहले दिन हमने इनको बुलाया था। देखिए डॉक्टर साहब है, ऊपर से जिम्मेदारी है पूरे एंटायर स्कूल की, तब वो आ नहीं सके, इमरजेंसी मीटिंग निकली। कमिटमेंट उन्होंने आज आकर पूरा किया। तो ये होता है कमिटमेंट, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। देखो वादा निभा दिया, दैट इज़ कॉल्ड कमिटमेंट। चलिए हम अतिथियों का सम्मान करते हैं। हम हमारा स्मृति चिन्ह HSRC का म्यूरल डॉक्टर प्रज्ञेश जी जोशी इनको वसंत काका प्रदान करेंगे। दस लाख वर्ष की सनातन संस्कृति की परंपरा, बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करता हूँ शुक्ला साहब से। शुक्ला साहब, आप हमारे HSRC का पब्लिकेशन मेन 5 चौपड़ियों दादाना विज्ञानी श्री अजीत भाई शाह साहब ने आप इन्हें भेंट आपी है। वेरी गुड, प्लीज़ स्मृति चिन्ह के साथ आपका हार्दिक स्वागत। जल्दी से ऐसा है क्या? छिल्ले बताएंगे। चलो वैलिडिक्शन प्रोग्राम है ये, छोटा सा सम्मान है, छोटा सा कार्यक्रम है। तो हम अपने माननीय अतिथियों से सबसे पहले आशीर्वाद ले लेते हैं। सर 2 दिन का ये टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप था। 7 सेशंस थे। वैल्यू एजुकेशन, डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, टीचिंग स्किल, ट्रेनिंग स्किल, सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक लाइफ एंड लिविंग। हम आज आपसे आपका आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। आइए आइए आइए, पधारिए। थैंक यू। Dignitaries on the dais and respected teachers and all the delegates. I feel so honored and privileged to remain present here in front of all of you. સૌથી પહેલાં તો તમને બધાને અને HSRCના કર્તાહર્તાઓને અભિનંદન મારે આપવા છે કે આટલો સરસ કાર્યક્રમ એરેન્જ કર્યો. વસંતભાઈ સાથે, માનનીય વસંતભાઈ સાથે વાત થઈ, શ્રીવાસ્તવ સાહેબ સાથે વાત થઈ અને એમણે મને આખી રૂપરેખા આપી કે અમે આ રીતનો પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, શિક્ષકોને આપીએ છીએ, શિક્ષકોને માટે ખાસ કરીએ છીએ, 2 દિવસનો વર્કશોપ કરીએ છીએ અને એમણે બધા ટૉપિક્સ મારી સાથે ડિસ્કસ કર્યા કે આટલું અમે ટ્રેનિંગ ઇમ્પાર્ટ કરવાના છીએ. તો તમને બધાને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને કરતા ધર્તાઓને પણ ખાસ અભિનંદન આપું છું કે આવો યુનિક અને એકદમ સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ પ્રોગ્રામ કરવા માટે. શિક્ષક માત્ર પરીક્ષા પાસ કરવા માટેનું શિક્ષણ નથી આપતા. શિક્ષકનો ઇમ્પેક્ટ બાળકના મન પર એટલો બધો હોય છે કે આખી જિંદગી બાળક યાદ કરશે તમને. જીવન ભારતી સંસ્થા સાથે હું અજીતભાઈ અટેચ થયા છીએ. અમે વર્ષોથી અમે જોતા આવ્યા છીએ અને તમે તમારું બી યાદ કરશો કે આજે તમે તમારા જે શિક્ષકો પાસે જે વસ્તુ ભણ્યા હશો એ આજે ઝીણી ઝીણી વસ્તુ તમને જિંદગીમાં કામ ખપ લાગે છે. ફલાણા ટીચર આપણને આમ કહેતા હતા, ફલાણા ટીચર આમ કહેતા હતા, ફલાણા ટીચરે મને આ બાબતમાં ટોકેલો, ફલાણા ટીચરે મને આ ટિપ્સ આપેલી. તેવું તમને જોઈને પણ તમારા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ આખી જિંદગી યાદ રાખશે. તો એ વસ્તુ કાયમ તમે ધ્યાનમાં રાખી અને આગળ વધતા રહેજો. પરીક્ષાલક્ષી શિક્ષણ, પરીક્ષા તો આવશે ને જશે, એક જશે બીજી આવશે, પણ સારામાં સારા વિદ્યાર્થીઓ, સારામાં સારા નાગરિકો બનાવવાની જવાબદારી શિક્ષકોની છે. ફરી એકવાર આપ સૌને અભિનંદન આપું છું આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે
અને મેનેજમેન્ટને પણ ખાસ ધન્યવાદ આપું છું કે આટલો સરસ કાર્યક્રમ એરેન્જ કર્યો અને અમને બોલાવ્યા અહીંયા. આભાર. થેન્ક યુ. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रज्ञेश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री अजीत भाई शाह साहब, आप भी अपने आशीर्वचनों से हमें उपकृत कीजिए. धन्यवाद. માનનીય શ્રી વસંતભાઈ, શ્રી શુક્લા સાહેબ, મારા સાથી મિત્ર ડૉક્ટર પ્રજ્ઞેશભાઈ, આપ સૌ શિક્ષક મિત્રો, આજના આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેતા અત્યંત ખુશીની લાગણી થાય છે. શિક્ષણને હોલિસ્ટિક સાયન્સ જોડે સાંકળવાનો એક નવતર પ્રયોગ કહી શકું, કારણ કે બહુ ઓછી જગ્યાએ આવો પ્રયોગ થતો હોય છે અથવા આવી કોઈક ટ્રેનિંગ થતી હોય છે. એટલે મારી દૃષ્ટિએ આ બહુ જરૂરી અને શિક્ષણના ક્ષેત્રને માટે બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે. શિક્ષણ એટલે પાઠ્યપુસ્તકના અભ્યાસક્રમ જેટલું ભણવાનું એવી વાત નથી. શિક્ષણ લેવાથી જો માણસ પોતાના જિંદગીમાં આવતા પ્રશ્નોને પોતાની રીતે સોલ્વ કરી શકે, એનો ઉકેલ લાવી શકે, એ જો કૌશલ્ય એ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ એણે ખરેખર શિક્ષણ મેળવેલું કહેવાય. બાકી ભૂગોળમાં પુસ્તક જોઈને, નકશો જોઈને ફરી પાછું નક્કી કરી શકાય કે ભાઈ અમેરિકા ક્યાં આવ્યું છે, અરબી સમુદ્ર ક્યાં આવ્યો છે. એટલે પુસ્તકનું મહત્ત્વ જરૂર છે, નથી એવું નથી, પણ એના કરતાં પણ વિશેષ મહત્ત્વ લાઈફ સ્કિલ્સ, જીવનના અંદરના કૌશલ્યો પણ શીખવાની એટલી જ જરૂરત છે. એટલે આજના આ તબક્કે તમે સૌ કદાચ આ વેકેશનના માહોલમાં આવી ટ્રેનિંગ માટે તૈયાર થયા, એ પણ બહુ તમને ખરેખર અભિનંદન આપવાને પાત્ર છે. બાકી આજના વાતાવરણમાં હું તો બીજી ઘણી સ્કૂલો જોડે સંકળાયેલો છું, જીવન ભારતી સિવાય સુરતની સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીની સ્કૂલ એકેડેમિક કમિટીનો ચેરમેન છું, પણ ઘણીએ વાર મેં એવું જોયું છે કે શિક્ષકો આવા વેકેશનમાં કાર્યક્રમો, શનિ રવિના કાર્યક્રમોમાં જાણે ફરજ માટે અથવા તો જબરજસ્તીથી આવતા હોય તેવી રીતે આવતા હોય છે. ત્યારે તમે સૌએ આ વિકલ્પ પસંદ કર્યો અને આજે આપ સૌ આવા 2 દિવસના એમાં હાજર રહ્યા, તે માટે આપ સૌને ફરી પાછા અભિનંદન આપું છું, વિરમું છું. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजीत भाई शाह साहब, थैंक यू वेरी मच. अब मैं स्कूल्स के नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ. आप अपने प्रतिनिधि को भेजिए और HSRC का स्मृति चिन्ह आपके विद्यालय के लिए. तो पहले आएंगे PVV ज्ञानपीठ, प्रबुद्ध वीणा वादिनी ज्ञानपीठ स्कूल सिलवासा. डायरेक्टर साहब पधार रहे हैं, श्री प्रफुल्ल भाई कुलश्रेष्ठ जी. निवेदन है अजीत भाई शाह साहब, इनको हमारा स्मृति चिन्ह आपके हाथों से दीजिए. आ जाइए, सेंटर में आ जाइए सर. ये फीडबैक सेशन भी है, यदि किसी को अपना वक्तव्य देना है दे सकते हैं. Respected Chairperson, the Director of HSRC, distinguished dignitaries, esteemed trainers, and all my dear teachers. It gives me immense pleasure to stand here in front of you today at the close of another enriching training session conducted by HSRC. First and foremost, I would like to sincerely thank Honorable Vasant Kaka, the Chairperson, and the Director of HSRC, Shri Chandrakant Srivastava sir, for again giving us this valuable training opportunity. Your continued support is deeply appreciated, and your vision truly helps
shape the future of our educators. Last year's training left a lasting impact on our school. We noticed visible changes not in just how the teachers engage or interact with the students, but in the overall energy in the classroom. There was a renewed focus on wellness, values, and the mindful teaching practices. This transformation motivated us to eagerly welcome this year's training also with open arms. Organizations like HSRC, with their focus on holistic science and education, are more relevant than ever. In today's fast-paced world, their work in promoting wellness, ethics, experiential learning, and integrated development is both necessary and commendable. And we are grateful for their achievements and their commitment to nurturing the roots of education. The sessions over these 2 days were beautifully designed to reflect the multidimensional role of teachers, from holistic wellness and ethics and integrity that shape the inner world of our students to assessment and evaluation, guiding us on fair and unbiased methods, and learning on the ground, which reminded us of the power of real experiences. We also explored essential tools like yoga and pranayama for mental clarity, improved our English communication, and dived into experiential learning for primary students. This session on memory enhancement equipped us with strategies for helping slow learners. Each session was not just informative, it was transformative. A heartfelt thank you to all our trainers, Mr. Lalabhai Patel, Mr. Chandrakant Srivastav sir, Mr. Sandeep Pandey, Mrs. Hinaben Chawda, and Mr. Hemant Sharma. Your dedication, insight, and sincerity have left a deep impression on us. To all my fellow teachers, this training is not just an event, it's a spark. Let's carry it forward into our classrooms, our planning, and our everyday interactions with the students. Our role is not only to teach, but to inspire, guide, and nurture. Let's walk the talk and become the role models we want our children to have. With that, I once again thank HSRC and everyone who made this training possible. Let us continue to grow together. Thank you. Thank you, Prafulji. Thank you for your feedback. I invite now representative from Euro International School. Please come on the stage to receive the mural. Euro International School, please. I request Dr. Pragnesh Joshi to do the honor. आइए साहब. Next is Sri Vasishtha Vidyalaya Surat. Mr. Pal, you can come. Or madam can come. Yeah, ma'am, you can come. Thank you. The next is Vasishtha Genesis School also. Madam, Vasishtha Vidyalaya, thank you. Sir ko do. Go, give sir. Shukla Sahab will is doing the honor, please. Thank you. Mr. Pal, you can come to receive for Vasishtha Genesis School. गेस्ट कोई तकल्लुफ महसूस न करे, आप अपने स्थान पर से ही इनको अवार्ड दे दीजिए प्लीज. वसन काका, बढ़िया, बहुत अच्छे. पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल अमरोली, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल सिलवासा, कोई आए हैं मॉडर्न इंग्लिश स्कूल सिलवासा? आइए मैम.
शुक्ला साहब, थैंक यू। डुंगरा प्राइमरी स्कूल, गजेरा इंटरनेशनल स्कूल, ओके, रामकृष्ण विद्या संकुल, नंसाड़, रामकृष्ण विद्या संकुल, प्लीज। स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट है आपके लिए, आपके स्कूल में रखिए। 10 लाख वर्षों का इतिहास है ये, सनातन संस्कृति परंपरा का इतिहास, ऋषभदेव भगवान से लेकर दादा भगवान तक ये म्यूरल में अंकित है। श्री स्वामीनारायण गुणातीत विद्याधाम चिखली, आइए मैम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 दिन में आपकी यात्रा कैसी रही, आपके प्रतिभाव क्या है, एक एक करके हम थोड़ा समय बचाएंगे, लेकिन संक्षेप में आप आकर शेयर कर सकते हैं। आपके किट में एक फीडबैक फॉर्म रखा है, वो भी आप निकाल लीजिए। रिटन फीडबैक प्लस ओरल फीडबैक, बोथ विल गो पैरेलल। सो मे आई इनवाइट एनीबडी हैज़ टू से समथिंग can come on the stage and share your experience. How did you feel in these 2 days? What did you derive from this program? Whether you are going to implement it in your professional life. हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, भाषा का बंधन नहीं है। अच्छा, यहाँ आने से कुछ फोबिया है तो फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। आपको कहना है तो आप हैंड रेस कीजिए। किसी को कहना है कुछ? हाँ हाँ, हर स्कूल से एक आए, इसका मतलब फिर हमारा जो कम्युनिकेशन का सेशन था, हाँ ठीक है ना, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन। यस, एनीबडी? मौनम सर्वार्थ साधनम, अच्छा है। यस मैम। वेरी गुड, सजेशंस आपो तमें, कहाँ कमी रही वो तो अवश्य बताइए, ताकि अगली बार हम उसको पूरा कर सकें। Most of the points. My name is Jasminder Kaur from Euro School, and I'm the senior coordinator there. I would just want to say that you have covered all the points, and they were really, really the ones that we are going to implement at our school in our classes. But one thing I would like to suggest to add in personal hygiene of the students. So that is one point that I would like if you could add in, please. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Anybody else from any other school? PVV ज्ञानपीठ, उस सर ने दे दिया है आपका फीडबैक। आप भी कह सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें या कुछ इम्प्रूव सजेशंस हैं आपके, तो खुलकर बोलिए। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। यस, मिस्टर शिवम वाजपेयी। Hello. How are you, my dear teachers? One more time, please repeat it very loudly. How are you, my dear teachers? I think this is a blessing of our late Chairman Sri Praveen Kumar Kulshrestha ji. This credit goes to him. Because of him, we are sitting here in HSRC. Whatever he taught us, that was, means you can say that it was a practical approaches for all the teachers. Always he keep on telling us how you have to focus on your teaching learning. As per the students, you need to change your style so that you can attract them, right? I know that
whatever the things we have learned here, few things we can implement, few things we will not. But it was good experience. Yes, for this I would like to thank Vasant Kaka and our Srivastav sir for this providing us wonderful opportunity. Thank you, sir. Jai Satchidanand. We extend our heartfelt gratitude to the esteemed principals and teachers of various schools for their invaluable participation and contribution to the Educators Conference on Holistic Development of Students. Schools in attendance today: PVV Jnanpith Silvassa, Euro International School, Surat, Shri Vashisht Vidyalay, Surat, Vashisht Genesis School, Bardoli, Odar International School, Amroli, Surat, Modern English School, Silvassa, Dungra Primary School, Gajera International School, Ramkrishna Vidya Sankul, Nansard, Shri Swaminarayan Gunatit Vidyadham, Chikli. Dear educators, your leadership and vision in embracing holistic education have been truly inspiring. We're grateful for the trust you've placed in us and for the enthusiasm with which you've engaged with our initiatives. The Holistic Science Research Center team salutes your commitment to nurturing the minds of future generations. Your dedication to fostering a more comprehensive understanding of education is making a tangible and invaluable difference. The study of holistic life and living is a lifelong journey. Sri Dada Bhagwan spoke extensively about the concept of right understanding and the eradication of ignorance. By fostering an environment of open inquiry, critical thinking, and a thirst for knowledge, we empower our students to dispel their inner darkness and gain clarity about themselves and the world around them. This right understanding is a powerful source of intrinsic motivation. Furthermore, Dada Bhagwan's teachings on nonviolence, ahimsa, extend beyond physical actions to encompass our thoughts and words. By cultivating a school environment filled with kindness, compassion, and respectful communication, we nurture the emotional well-being of our students, creating a safe and supportive space where they feel encouraged to learn and grow without fear. In the spirit of this holistic approach, let us consider practical ways to integrate these timeless principles into our daily educational endeavors. Beyond textbooks, we have the profound opportunity to guide students in developing essential life skills, fostering emotional intelligence, and encouraging a strong moral compass. For instance, creating spaces for open dialogue allows students to safely express their perspectives and learn active listening. Encouraging collaborative projects nurtures empathy and teamwork, preparing them not just for their careers, but for future harmonious living. When we integrate these elements, we are not just imparting facts, we are shaping well-rounded individuals who are resilient, compassionate, and equipped to navigate the complexities of life with clarity and purpose. You as educators are not merely instructors. You are profound facilitators for inner growth. In the spirit of Sri Dada Bhagwan's teachings, where the focus is on self-realization and the understanding of one's true self, your role transcends the curriculum. You have the unique opportunity to help students connect with their innate potential, guiding them to recognize their strengths, managing their emotions, and developing a strong moral compass. Every interaction, every lesson, and every moment of empathy you offer becomes a stepping stone in their journey towards self-discovery and ultimately inner peace. By nurturing this inner dimension, you empower them with resilience and an unwavering sense of purpose that will serve them long after they leave your classrooms. Just as a river flows continuously, nourishing the land it touches,
Let our motivation, enriched by the wisdom of Sanatan Dharam, be a constant stream uplifting and inspiring our students. Let us be the guiding lights, showing them the path towards knowledge, wisdom, personal growth, and ultimately happiness. May our collective efforts create an educational landscape where every student feels valued, empowered, and motivated to reach their highest potential, both in their academic pursuits and in their inner journey. Thank you for being an integral part of this journey today with us. We look forward to continued collaboration and mutual growth. Jai Satchidanand. उस बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर वो पधारे वसंत काका के आग्रह पर, और उनकी उपस्थिति ने एक स्पेशल वाइब्रेशंस तैयार हो जाती है। आप देखिए मेहमानों का बड़ा महत्व होता है, तो माहौल को खुशनुमा बना दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय वसंत भाई पटेल साहब, हमारे गुरुदेव एकेडमिक रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट श्री लाला भाई पटेल साहब, श्री योगेश भाई शुक्ल साहब, श्री केतन भाई रूपारेलिया जी, श्री गुणवंत पटेल साहब, तमाम ट्रस्टीज़ को वंदन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भोजन की व्यवस्था करने वाले तमाम टीम, गुणवंत भाई साहब की, किशोर भाई, इंदुबेन, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खास आभार हमारी गृह माता श्रीमती लक्ष्मीबेन पटेल, जो लंबे समय से यहाँ समर्पित है, और उनकी खासियत ये है कि सेल्फ अपॉइंटेड टास्क, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है वो हाजिर हो जाती है। बहुत संभाला, हर एक चीज़ पर ध्यान दिया। लक्ष्मीबेन जी को मैं सादर प्रणाम करके उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हमारी टीम HSRC की श्री प्रदीप भाई पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी का आपने बहुत अच्छे से हैंडल की। श्री गोपीनंदन, गोपीनाथ, मधुबाला लाइब्रेरियन, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ पधारे हुए सभी टीचर्स, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, ये हमने देखा। तमाम सेशंस में एक भी टीचर ने यॉर्निंग नहीं की इस तरीके से, तो ये अच्छा मैसेज है। नहीं तो सेशंस में अक्सर यॉर्निंग होती है। हर एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से सुनी, इंटरेक्ट किया। अंतिम समय पर शायद बड़े बड़े मेहमानों को देखकर आपको लगा हो कि अभी हम क्या बोलेंगे, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन लिखित रूप में आप फीडबैक दीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत आभार। यू हैव एंटर्ड टू लर्न इन HSRC, एंटर टू लर्न, नाउ एग्जिट टू सर्व। आपने जो पाया है, दिल खोल के जितनी खुशियाँ आपको मिली है ना, जो हमको प्राप्त होता है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम दुनिया को वो दें। और दादा भगवान का कथन है, यस मैं, हाँ सर बोलिए सर। शुक्ला साहब कुछ कहना चाहते हैं। जय सच्चिदानंद। आप सबकी तरफ से, हमारे ट्रस्टियों की तरफ से और मानव समाज के सभी जुड़े हुए संत पुरुष, सत्पुरुष और ज्ञानी पुरुष, सबके आशीर्वाद कृपा, ऐसे हमारे होनहार डायरेक्टर हमको मिले हैं, उनका लंबी आयुष्य मिले और सदियों तक उसका काम लोग याद करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रणाम करता हूँ। उसका आशीर्वाद बना रहे आपका। अभिवादन, अभिनंदन या क्या कर सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ऐसे एक आदमी हमको मिला है, वो भगवान का भेजा हुआ देवदूत है, और हम हमारे यहाँ कायम बंधे हुए रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए दादा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। ये अमूल्य हीरा है हमारे लिए। बहुत 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 बड़ी बात कर दी आपने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभूत हो गए हम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार है, स्नेह है, अपनी गाड़ी चलती है धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से। तो आप सभी को, टीचर्स को, ख़ास तौर से सभी स्कूल के टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पाया उसको आगे बढ़ाइए। और हमारी रिकॉर्डिंग टीम जो अहमदाबाद से आई हैं, रमेश भाई ठाकुर की, तो हेमंत बाबू हमारे मित्र, आपका नाम बताइए भाई। हाँ, उपाध्याय, गोपाल जी, आपने इस कार्यक्रम को अमर बनाया,
ये आपकी देन है, हाँ, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हुआ है, ये हमेशा रहेगा। तो आपको भी दिल से, हृदय से धन्यवाद। सभी टीचर्स को सादर प्रणाम। और हमारे सफाई कर्मचारी बुधिया भाई, षणमुख नाथ, कल्पना बेन और उषा बेन, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम जब होता है इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हम राष्ट्रगीत के साथ, यस सर, गिरधर भाई, हाँ गिरधर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दोनों वॉचमैन, उनको भी, हाँ गोपी भाई, सबको प्रणाम मेरा। जिनके नाम नहीं लिया उनको नमस्कार करते हुए धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए अभी हम राष्ट्रगीत के लिए खड़े होंगे और समापन करते हैं इस कार्यक्रम का। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की। थैंक यू, गुड टाइम।